Hello students, today I am going to teach you how to make the cubital fossa. First, we will try to understand what is a cubital fossa. So cubital fossa is a hollow shaped fossa or hollow shaped cavity sort of in front of the elbow joint. Okay, so first and it forms a triangular kind of a fossa. So the cubital fossa is formed at the lower end of humerus. Okay, so first we will draw the lower end of humerus. I am going to write here cubital fossa. Very commonly asked question. So we are going to draw first the lower end of humerus. So as you can see, this is the lateral epicondyle, and then here we will draw the medial epicondyle. Fine. And then here will be lateral side will have the capitulum and medial side will have the trochlea. Fine. And then there will be two depressions here. What are these? For the ulnar notch to move at the trochlea, and for the coronoid process to get lodged here, and this is for the head of radius. So radial fossa and the coronoid fossa. Okay. So this is the lower end, this is the medial side, and this is the lateral side. Okay. Now we will draw the other bones. Okay, so this is the head of radius. This is the shaft, like this, and here will be the coronoid, the ulnar tuberosity, and the shaft of ulna. This is the notch where the radius. So this is the ulna. Okay, so almost at the middle of the shaft of radius gives attachment to pronator teres. So there are muscles, two muscles. One is brachioradialis, which arises from the common extensor origin. It arises from the common extensor origin, which is the lateral epicondyle of humerus, and slightly above from the lateral supracondylar ridge. Okay, so this is how the muscle goes, and this muscle will be inserted at the lower end of the lower end of radius. Okay, so this is how the muscle goes. ऐसे. This muscle is called as brachioradialis. So the attachment is common flexor origin at the lateral epicondyle and lower part of the supracondylar ridge. But the muscle fibers will run like this and make the lateral border of the forearm. ठीक है, ऐसे करके लोअर एंड पे ये इंसर्ट होता है. ठीक है, वी डू नॉट वांट इट टिल देयर, वी ओनली वांट इट इन दिस रीजन. ओके, from the common flexor origin arises from the medial epicondyle. This is the common extensor origin. The name of the muscle is brachioradialis. Brachio means arm, from the arm to radius. So this is brachioradialis. The second muscle that I am going to draw is pronator teres. So teres means a round muscle which is attached, or it goes deep to the brachioradialis, and it is somewhat a rounded muscle which has two. So this is round muscle which has a superficial head and a deep head also. A deep head also which goes here. Okay? It attaches onto the middle of the shaft of radius. So this is the pronator teres muscle.
ठीक है, in this muscle goes deep to the brachioradialis. Now the imaginary line passes through the lower end of humerus, passing through both the epicondyles. So this triangular gap in front of the elbow joint is called as a cubital fossa. ठीक है, so the base is an imaginary horizontal line joining the two epicondyles. ठीक है, तो this is the gap. So it will be the pronator teres has two borders. One is called the medial border क्योंकि medial side में, this will be called as the lateral border of the pronator teres. तो जो cubital fossa का boundary होगा, it will include the lateral border and the medial border of brachioradialis. मतलब both the muscles do not form a part of the cubital fossa. Now this is what we are going to talk about. ठीक है, now what are the contents of cubital fossa? Contents में आता है 4 स्ट्रक्चर्स एंड इसके फ्लोर में 2 मसल्स आते हैं. ठीक है, तो वन मसल इज ब्रेकियालिस. ठीक है, अब ब्रेकियालिस कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, तो ऊपर से ब्रेकियालिस यूँ आता है एंड इट विल बी अटैच्ड ऑन टू दिस डीप टू प्रोनेटर टेरिस, दिस एरिया ऑफ the ulna, which is called as ulna tuberosity. So it comes and it will be attached here deep to it. जब हम deep बनाते हैं तो हम उसको shaded बना देते हैं. ठीक है, so this muscle is called brachialis and it will be attached deep. So this forms the floor of the cubital fossa, and the second muscle which forms the floor is the supinator, which is going around like this. ठीक है, it is going around like this deep and it almost encircles the upper part of the radius. ऐसे it twines around the radius. So these two muscles will form the floor. ठीक है, अब इसके ऊपर now the names, this is pronator teres. Pronation करता है means turning the hand like this. If this is supination, if you turn your hand like this is pronation. So done by this muscle, powerful pronator. ठीक है, now this is brachialis and this muscle is supinator. So from pronated position, if it helps to turn the hand like this is done by supinator. ठीक है, now we will talk about the structures which are lying within the cubital fossa. So the mnemonic goes like this. It is MBBS. ठीक है, so M stands for median nerve. ठीक है, then B stands for biceps tendon. ठीक है, another B stands for brachial artery. It's like, it is this B stands for brachial artery and this B stands for biceps tendon. ठीक है, why I will tell you. And this S stands for the superficial branch of radial nerve. I'll tell you why. Because the structures go from medial to lateral. ठीक है, तो मीडियल टू लेटरल में मीडियन नर्व के बाद सबसे पहले आती है ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद आता है बाइसेप्स का टेंडन. सो देयरफॉर मीडियन नर्व के बाद आएगी ब्रेकियल आर्टरी, उसके बाद बाइसेप्स टेंडन, उसके बाद सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट. एंड जो मीडियन नर्व है ना, ये मैंने बताया था प्रोनेटर टेरिस के 2 हेड है, एक सुपरफिशियल हेड, एक डीप हेड. यहाँ तुम्हें दिख रहा है गैप, इस गैप में से मीडियन नर्व पास हो जाती है, इधर अपीयर करती है. ठीक है, ये. सो दिस नर्व इज कॉल्ड एज मीडियन नर्व. ठीक है, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन लाइन इज
एम के बाद brachial artery, MB, ठीक है. So it is brachial artery. So brachial artery comes from above and just at the neck of the radius it divides into two. It divides into two, the radial artery and the ulnar artery. यहाँ पे ये डिवाइड हो चुकी होती है. ठीक है. सो दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी. नेक्स्ट इज द बाइसेप्स मसल और उसका टेंडन. तो बाइसेप्स मसल कम्स फ्रॉम हियर एंड द टेंडन इज इंसर्टेड जस्ट बिहाइंड दिस. ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी इसके ठीक पीछे इंसर्ट होता है. तो ये बाइसेप्स आया मसल ऐसे, बाइसेप्स मसल ऐसे आया और टेंडन वी विल मेक विद अ ग्रीन कलर. तो ग्रीन कलर से हम इसका टेंडन बनाएंगे और ये टेंडन इसके पीछे ये वाला जो ट्यूबरोसिटी है रेडियस का यहाँ पे जाके इंसर्ट होगा. ठीक है. ये तो ये रहा बाइसेप्स का टेंडन और उसके ऊपर उसका फ्लैशी पार्ट विच वी विल ड्रॉ विद ब्राउन कलर. So brown fleshy part of the muscle and green is tendinous part of the muscle. तो ये हो गया हमारा biceps muscle और ये उसका टेंडन ऑफ biceps. ठीक है. तो M हो गया, B हो गया, ब्रेकियल आर्टरी, ये ब्रेकियल आर्टरी एंड ये बाइसेप्स का टेंडन. ठीक है. ब्रेकियालिस जो था वो फ्लोर बना रहा था. फाइन. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ से हमारा आएगा एक नर्व विच इज डिवाइडिंग. ये नर्व है, ये रेडियल नर्व है जिसका ये सुपरफिशियल ब्रांच है और ये डीप ब्रांच इधर को चला गया. ठीक है. तो ये सुपरफिशियल ब्रांच जो है ये 4 स्ट्रक्चर्स हमारे क्यूबिटल फॉसा के कंटेंट है. ये एस के लिए है. ठीक है. सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. ठीक है. ये वाला. तो MBBS हमारा सफाइस हो रहा है. MBBS मीडियन नर्व ये वाली, देन ये ब्रेकियल आर्टरी. ठीक है. फिर एक और बी बाइसेप्स और उसका टेंडन. ठीक है. और ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल MBBS, ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. सो दिस इज द डायग्राम विच यू शुड ड्रॉ इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन क्यूबिटल फॉसा. थैंक यू.